we will be discussing the GS paper 2 of the open tests. And basically, I will take the 12 questions which I found most analytical, and I will be discussing the frameworks rather than the specific content. Okay. So in this particular paper, I will be discussing two things or three things. First will be the structuring. That is what should have been your headings, how you will be, or what should have been your overall structure. Second, what framework or thought process you should have incorporated for generating the points. Okay. And third would have been overall with respect to the presentation, how you could have improved your presentations. Okay. And the specific content or the data, etc., you can get from the model answers. So model answers have already been uploaded on your portal. Okay. So let's start. So I will take the first question. So basically, this is with respect to the difference. So first, what they have asked, it distinguish between procedure established by law and due process of law, and how does Supreme Court harmonized the both the doctrines. Okay. This. So basically, in this particular question, there are two demands. One is this, and second, how it has harmonized. Now, if you see, this particular type of the question has been asked by UPSC previously also. So only thing that they asked was with respect to the fundamental rights and DPSP. Okay, so similar question they can ask you with respect to the procedure established by law and due process of law. Similarly, they can ask you with respect to the data privacy law also. Okay, how does data privacy law seek to establish the harmony between the data protection and data utilization, or data and right to information? Okay. So overall, whenever you get the differences, there is a framework which you can use to generate the points. So in this particular question, introduction, basically you can start with Article 21. As per Article 21, nobody or permits deprivation of life and liberty by procedure established by law. However, Supreme Court has widened the scope by incorporating due process. So in this way, you can provide the introduction by highlighting the constitutional provision related to the both concepts. Then when you come to the differences, so there are 7 to 8 points or dimensions which you should always keep in mind to generate the points. Okay. The first is, so dimension with respect to the origin. Yeah. Second, definition. Third, nature and scope. Fourth, objective. Yeah. Fifth, the role of stakeholders. Sixth, its merits. Seventh, demerits. And eighth, example. Yes. Now, remember this framework even for the ethics questions also. So in ethics also, whenever they ask you the differences, you can use this framework to generate the points. Okay. So the origin of procedure established by law and due process of law. Okay. So what is the origin of procedure established by law? So with respect to the procedure established by law, obviously the origin of it you can find in the Japanese constitution, and due process of law
is US Constitution. It's given into your intro, this Lakshmikant itself. Okay. Then you can go with the definition. So it checks the procedural correctness of laws enacted by legislature, and it checks the wisdom behind the laws, right? Then the nature and scope. So nature is limited to checking the procedure. Then nature is wide. The court examines the fairness and reasonableness behind the law. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव बेसिकली डेफिनेशन नेचर से आ रहा है तो वी वोंट गिव द ऑब्जेक्टिव बट रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स. ठीक है, सो रोल ऑफ स्टेक होल्डर, हु इज द authority which determines the or uses the procedure established by law or the due process of law. Is it executive, judiciary or legislature? It is judiciary, right? Okay. So what is the role of judiciary? Yes. So role of judiciary is limited to strict separation of power or parliamentary sovereignty exists. Right, because judiciary cannot encroach into the domain of legislature. That means there is parliamentary sovereignty or the strict separation of power. So the role of judiciary here is expansive. Key judges test the laws content and logic. ठीक है, this then इसका मेरिट दे दो. Merits upholds separation of power and representative democracy, because the legislature, members of the legislature are elected by the people, so it upholds representative democracy, right? Then इसके merits है protects citizens from executive and legislative overreach और arbitrariness, या फिर upholds constitutional morality, right? Then इसके demerits है permits harsh laws if procedure is followed. This due process की misuse can lead to judicial overreach. And then you give any of the example. तो example आपका क्या आएगा? ये followed in UK, and this is followed in India and US. Example NJSC verdict, right? तो अब क्या आ गए 8 points. So if you use the framework, you can easily generate the notes. All of you already know these points. ऐसा नहीं है कि मैंने invent किया या फिर you don't have this vocabulary, right? It is just the game of the frameworks. So just remember this framework. And now the second part, कि how has Supreme Court harmonized? Okay. Always now I am just giving you one principle which you need to keep in mind. Okay. Sometimes what happens is
आपकी क्वेश्चन इज वेरी रैंडम. So in such questions, you have limited dimensions. Yeah. Either random or very specific. So in such cases, you may have limited dimensions. तो जैसे ये वाला second part जो है harmonization, you might have very limited dimensions. ठीक है. So in such questions, how to tackle कि यहाँ पे the only thing that you need to keep in mind is that avoid generic, peripheral or irrelevant points. जस्ट आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, इसीलिए डोंट गो फॉर जेनरिक और इरिलेवेंट पॉइंट्स. दिस इरिटेट्स इवेल्युएटर. इफ देयर इज वन फाउंडेशनल प्रिंसिपल विच यू नीड टू फॉलो इनटू योर आंसर राइटिंग इज द रिलेवेंस. कभी भी रिलेवेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो इवन इफ यू हैव 2 डायमेंशंस, दैट्स फाइन, यू राइट ओनली 2 डायमेंशंस. ठीक है. सो टू टैकल दिस, कि डायमेंशंस तो लिमिटेड है बट पेजेस तो भरने हैं. ठीक है. सो देयर व्हाट यू कैन डू इज you adopt two-pronged approach. One, you make your or dimensions example oriented. Okay, how you are going to make it example oriented? What you basically do is attach 2 or 3 examples for each point. Second way is you introduce new headings. बस इसमें you need to ensure that the weightage of this is maximum 20%. मतलब कि जो पूछा नहीं गया है अगर आप वो लिख रहे हो, तो जैसे इस वाले में आफ्टर हार्मोनाइजेशन यू कैन गो विथ चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड इन टेबल. ठीक है. बट वो आपका कितना होना चाहिए? इफ दिस इज योर एंटायर पेज, यहां तक आपका आना चाहिए और इसके बाद challenges, way forward, और मैक्सिमम 2 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे. ठीक है. सो इफ यू ओवरडू दिस where you are writing 5 or 6 challenges and 5 or 6 way forward जो कि पूछा नहीं गया है, that again will compromise the relevance part. ठीक है. ये समझ आया? Is this part understood? Yes. Okay. Now you come to the second part where you will highlight the role of judiciary in harmonizing both concepts. अब यहाँ पे overall you need to give the evolution. So first, the original position. So original position you mention कि A.K. Gopalan, which held that the due process is not the part of constitution and upheld preventive detention. Okay. Then you come give the Menka Gandhi case where Supreme Court held that due process is implicit in procedure established by law. ठीक है. And then it established by Article 14, 19, 21 can be used to test the validity of law. ठीक है. This. Then you simply give due process and इसके you give the any 3 examples. ठीक है. So you have right to privacy.
You have NJC Act. Okay. You have with respect to the this death penalty, so procedural safeguards in death penalty. So Bachchan Singh case, it was limited to rarest of rare case. And then briefly give the challenges. Way forward. तो दो challenges दे दो, दो way forward दे दो. So what will be your challenges? So risk of जुडिशियल ओवररीच अपने ऊपर यूज किया है तो जुडिशियल एडवेंचरिज्म. ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग वे फॉरवर्ड जुडिशियल रिस्ट्रेंट, which was basically suggested during the recent act, sorry, the recent presidential reference. And you give one more challenge, which can be violates separation of power, but separation of power will be repeated. So non-defined doctrine. So risk of misuse. ठीक है, एंड देन यहाँ पे delineate the scope of the analysis. And then you give the conclusion. So ऐसे आपका स्ट्रक्चर बन सकता है. And if you want to bring further innovation into this, okay, so you can simply along with the conclusion. So conclusion आपका थोड़ा सा futuristic हो सकता है, तो what you can do? You can use the diagram. So procedure established by law, due process of law, and this is constitutional. But या फिर supremacy of the constitution or constitutional supremacy, right? So even with the limited content, you can write the relevant answer if you have the proper framework and if you follow the example oriented approach. Yep. Is this clear? The first question. Okay. Now coming to the second. Second, it is a completely factual question. The only thing I won't go with the facts in this question, I'll just give you the structure. So what basically they have asked, critically examine the implications of Transgender Persons Act on right to self-identification under NANSA. Okay. So critically examine and the implications also they have asked. Right. So in both the cases, either critically examine or implications, we always give positive and negative. Right. So this is the context-based question because it is a current affairs-based question. So automatically your introduction will be context. Recently, Parliament has passed a Transgender Persons Amendment Act to, तो जब भी एक्ट होता है तो एक्ट प्लस उसका ऑब्जेक्टिव. So the objective of the act was to remove ambiguities in 2019 Act and prevent misuse of the. कभी भी एक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन जब आप दे रहे हो, you can go with the objective of it, or you can add the data also fact file. India has 4.8 lakh transgender persons as per census 2011. So you have a very good introduction. Then self-identification recognized in the NANSA judgment. After this, briefly, you give NANSA judgment provisions,
Then you give the implications of amendment on self-identification. Okay. So first you give negative. अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा था कि रिलेवेंस, तो इवन इफ यू नो all the provisions of the amendment, you need to put only those provisions which are related to self identification. So if you see the model answer of this answer, particular question, यहाँ पे भी first I have given Nalsa judgment benchmarks. You can pick any three, briefly diagram बना के दे दो because that is your implicit demand. Then implications on self identification, यदि नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, यहाँ पे भी जो ये वाले पॉइंट्स है दे आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कि जैसे रिमूवल ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन राइट, डीएम इश्यूज identity certificate after medical board recommended it. Yes, so self identification has been removed. Then the definition of the transgender has been narrowed. Okay, so the only the traditional identities like Kinder Hijra were kept. And the other identities like trans men, trans women, trans queer have been removed. Yep. Then discretionary screening empowers DM to seek additional expert medical opinion. Again, self-identification impacted. Okay. Then hospital reporting and fresh applications post surgeries. Even after post surgeries, you need administrative recommendation. Okay, so basically, only provisions dealing with self-identification. And if you have other negative impacts or the criticisms of it, you make these separate headings. The other implications. That is, it can lead to the exclusion from the welfare. Then state validation over autonomy invert undermines the Nalsa judgment. And then violation of privacy. तो अगर आपके पास दूसरे है तो दूसरे दे दो, एंड देन यू गिव द काउंटर आर्ग्यूमेंट कि प्रोविजंस डिफेंडेड एज improved. Then briefly you can give way forward and conclusion. ठीक है, अब यहाँ पे this part is optional. This is not mandatory. This is optional. But you need to have these three headings: negative implications, counter view, and way forward. Hamesha, even in way forward also, I always suggest you to ensure 2 points. One is the global best practice. Second, state level best practice. Third, scheme. Across the GS papers, if possible, wherever you are giving the way forward, you try to incorporate this. So maybe Argentina gender identity law, state based practice, कर्नाटका रिजर्वेशन और तमिलनाडु बोर्ड. ठीक है, दिस ये भी अगर आपने दो वे फॉरवर्ड दिए होते तो भी आपका चल जाता है. स्कीम, इस्माइल स्कीम एंड गरिमा ग्रेयर स्कीम. ठीक है, तो ट्राई टू अडॉप्ट दिस फ्रेमवर्क. ये क्लियर है? सो इवन इफ द क्वेश्चन इज स्पेसिफिक, द क्वेश्चन हैज थ्री डिमांड्स, and even if you give just 3 points or 4 points under each heading, then also you will have sufficient amount of the dimensions. Yeah, way forward, if they haven't asked you, maximum 2 to 3. Wherever you are going beyond the demand, it should be using the diagram. It should be carry very limited weightage, तो 2 to 3, और उसका elaboration भी काफी छोटा रखो. Yeah, this. Now PESA Act is fine. You can just read it from the model also. Yes. Now this comment on the expected role of interstate institutions in resolving federal disputes.
why have they underperformed? Basically, this is the question related to the federalism. So for federalism, in our DAW lectures, I have given you three different introductions. If they ask you with respect to the cooperative federalism, if they ask you with respect to the competitive federalism, and if they ask you with respect to the confrontational federalism. ठीक है, तीनों का I have given you different scholars and different introductions, right? So यहाँ पे you can use Greenville Austin, who calls Indian federalism as the cooperative federalism, and the interstate institutions are aimed at strengthening that cooperation. ठीक है, तो you have scholar introduction and then you are linking it with the theme of the question. After that, simply role of interstate institutions in resolving disputes. अब सिंपल आपको इंटरस्टेट इंस्टीट्यूशंस बोला है, तो सिंपली यू मेक योर इंटरस्टेट इंस्टीट्यूशंस एज द पॉइंट्स. तो जैसे इंटरस्टेट काउंसिल, सेकंड दिस रिवर, इंटरस्टेट रिवर बाउंड्रीज, वो वाला. ठीक है, सो रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स, you have zonal councils, you have GST council, you have northeast zonal council, you have Niti Ayog, right? तो इन्हीं को you can make the subpoints. और हर किसी का इंटरस्टेट काउंसिल तो रिजॉल्विंग दी so established under Article 262 to resolve the disputes or the interstate disputes related. अब इसके नीचे you can make two subpoints. Yeah. So forum to resolve center state or provides platform to resolve center state disputes. So example की finance commission recommendations. You also have finance commission also. यहाँ पे interstate disputes, जैसे example boundary disputes between Maharashtra, Karnataka over Belgaum. So river water dispute तो आपको पता ही है कि कावेरी वगैरह कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. Then provide the regional developmental plan and resolving disputes. ठीक है, GST council establishing consensus on GST rates and resolving disputes related to the or disputes like compensation, taxes, or inclusion of petrol, etc. With respect to the Northeast Council, resolving the ethnic and territorial disputes between the northeastern states. So Niti Ayog provides a platform for competitive, cooperative federalism under spirit of Team India. ठीक है, then you have finance commission. तो फाइनेंस कमीशन छोड़ दो, इतने भी सफिशिएंट है आपके. So simply because they are asked to federal disputes, so simply using the institutions you can make a point. अगर क्वेश्चन बस इतना ही होता कि comment on the expected role of interstate institutions, ठीक है, so in that case the expected role would have been your subpoints. What is the expected role? उसमें से एक आपका आ जाता resolving federal disputes, strengthening cooperation, fostering competitive federalism, right?
ensuring the regional development plans, then ensuring the fiscal devolution pattern or fiscal devolution criteria. ठीक है, फाइनेंस कमीशन दे सकते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इंटरस्टेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वैसे एंड देन व्हाई हैव दे अंडर परफॉर्म्ड. अब फॉर ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज देयर आर ऑलवेज few common issues which you can put across. So the issues में आपके आएंगे, पहला तो mandate issue. Yes, generally all of them have advisory issues. Sorry, the advisory powers. So their powers are non-binding. ठीक है. Second, second is with respect to the political. So lack of political will. So example, Interstate Council was established only in 1992 despite explicit constitutional provision. ठीक है. So political will. Third, institutional issues. So generally lack of separate secretariat. ठीक है. This then judicial intervention. As a, for example, on river water disputes under Article 136. So the special leave petition. And this undermines the authority. Okay, that. And last is overlapping mandate. So they say between interstate council, river tribunals, and zonal councils over sharing of water bodies. तो इसमें अगर जुडिशियल इंटरवेंशन का छोड़ा तो ये जो कॉमन पॉइंट्स है दीज विल अप्लाई टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज. ठीक है, आप यूपीएससी का ले लो, यूपीएससी को भी आपके यही पॉइंट्स बैठ जाएंगे. ठीक है, देन यू गिव दी वे फॉरवर्ड, जो आपके करस्पॉन्डिंग इश्यूज है उन्हीं के वे फॉरवर्ड दे दो. ठीक है, तो एक तो कमीशन इंक्लूड कर लो एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू दी बाकी इंटरस्टेट काउंसिल के जो वे फॉरवर्ड्स है, जीएसटी काउंसिल के जो वे फॉरवर्ड्स है वो दे दो. 3 वे फॉरवर्ड भी आपके सफिशिएंट. हियर यू हैव around 6 points. Here you will be having 5 points. So 11, even 2 way forward, you will reach 13 points. ठीक है? Is this clear? All right. So after fifth, the sixth question. Do you agree with the view that constitutional protections available to civil servants shield dishonest more effectively than they protect the honest? Justify your view. In this particular question, as they have asked you the opinion, again, argument in favor, arguments against. Okay, this. So introduction, you can give it Sardar Patel, civil services from the steel frame and constitutional safeguards are provided to ensure their neutrality and impartiality. Objectives. So this will be your introduction. Okay, this. Then you come to the
constitutional protections. So constitutional this. अभी इसमें आपका आएगा आर्टिकल 310 प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 311, तो उसमें भी within article 311 you have section 1 where it is held that he cannot be dismissed or removed by authority subordinate to him. And then 311 section 2, there should be the there should be the proper inquiry and right to. ये तो हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दी सेफगार्ड्स. अब यू हैव दी स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स आल्सो, उसका सेपरेट बन स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स की प्रायर कंसेंट फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो सेक्शन 17. ये एक सेपरेट पॉइंट उसमें करो, उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट मत करो. Then you give the heading that ki shield this ki constitutional safeguards shielding dishonest more than protecting this. And then arguments in favor. Yes. So kabhi bhi whenever you are coming to the analysis of any of the provisions, you simply keep the focus upon provisions. अब यहाँ पे इन्होंने दो चीजें बोली है, ठीक है. फर्स्ट कि हाउ दे शील्ड डिसऑनेस्ट एंड हाउ दे फेल टू प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट, ठीक है. तो ऑनेस्ट ऑफिसर्स व्हाट इशू दे फेस, यस, व्हाट इश्यूज honest officers face? Yes, please turn on the cameras. Yes, transfer, so it fails to prevent arbitrary transfers. Okay, what else? What other? Fabrication in cases, okay, what else? उसके बियॉन्ड, फैब्रिकेशन के बियॉन्ड रिमोट एरिया पोस्टिंग वो आ गया ट्रांसफर में. थ्रेट टू लाइफ, so for example your whistleblowers like Satyendra Dubey who were murdered for exposing the corruption, right? So fail to protect whistleblowers. यहाँ पे प्रमोज ट्रांसफर्स में आप दे दो, अशोक खेम का ट्रांसफर 54 टाइम्स, फेल टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर सत्येंद्र दुबे. एंड हाउ दे शील्ड डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या जो भी दिया है, ठीक है, तो देयर शुड बी दी इंक्वायरी. तो जनरली जहां पे भी इंडिया में इंक्वायरी बैठती है उसमें क्या होता है, whenever there is an inquiry in India, in that inquiry generally what happens, political safeguards नहीं, तो generally delays in inquiry. Yeah. Second, even after, so this right to heard, that means key appeals to the cat and set further delays
the dismissal. Third, for all India services, the power to removal and dismissal. Who has the power to remove or dismiss all India service officers? Is it center or state? Hmm. Center, with center, even though they work under state. And lastly, the political protections or the politician, bureaucrat, business nexus. Who has given this, the nexus between politician, bureaucrat, and civil servants? Sorry, business. Which committee has talked about this? Vora committee. Lico. This leads to symbolic action instead of substantive. This fails deterrence. The example, suspension instead of dismiss. Okay, देखो, even with this you have 2 points here, you have 4 points here, you have 6 points. Right? इसके बाद अगर आपको और देने पॉइंट्स तो अदर इश्यूज कर लो यहाँ पे कि एक तो डिलेज इन with respect to this prosecution sanction under PCA, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो हमने यहाँ पे लिखा था, प्रायर सैंक्शन लगता है तो उसमें डिले। देन कि नो स्टेट हैज और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस. What is the Supreme Court case, or in which case Supreme Court has provided the guidelines for civil services reforms? Subramanian. Prakash Singh Badal is for police reforms. ये Subramanian is are not followed. तो इवन जब भी आपके पॉइंट्स वो डायरेक्टली आर नॉट रिलेटेड टू द डिमांड, but are related to that theme, you give them under the separate headings so that आपका रिलेवेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो. और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो आपको ये दोनों थीम्स पकड़नी है कि हाउ दे शील्ड डिसऑनेस्ट एंड हाउ दे फेल टू प्रोटेक्ट ऑनेस्ट. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ यू आई कैन गारंटी you have thought only from this perspective. How many of you have written the point related to this? Who has written the point related to how they fail to protect honest officers? Yes, anyone? You can just raise your hand. Good. Just one. है ना, तो जो भी क्वेश्चंस के कीवर्ड्स है उनको प्रॉपरली पकड़ लो. देन अदर इश्यूज, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सो काउंटर आर्ग्यूमेंट में यू ऑल यू नीड टू गिव इज जस्टिफिकेशन ऑफ दीज प्रोविजंस. ठीक है, सो जस्टिफिकेशन मतलब ये राइट टू हार्ड एंड नॉन डिसमिसल विदाउट इंक्वायरी दे लीड्स टू और फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस.
right? And they prevent political vendetta against honest officers, right? And third, ये जो issues है, ठीक है, the issues are not because of constitutional provisions. The issues are majorly because of their implementation. Okay, so the issues are due to intent rather than provisions. ठीक है, उनका इंटेंट सही नहीं होता तो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव द मिसयूज. देन यू गिव द वे फॉरवर्ड. तो कोई भी तीन वे फॉरवर्ड दे दो. कंक्लूड. So in conclusion, you can link it to Karma Yogi. ठीक है, इज दिस क्लियर? यस. तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जैसे given by Supreme Court in Vinit Narayan case. Then strict action against corruption. तो आपका यहाँ पे यू हैव सिंगापुर मॉडल. कमिटी के लिए सेकेंड ARC which has suggested to remove Article 310 and create a statute for timely disciplinary provisions. ठीक है, तो यू हैव योर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, यू हैव कमिटी. Okay, so even if you have limited of the content, if you just pick the keywords and if you just apply the common sense, you can generate the points. ठीक है, is this question clear? Yes. Fifth. All right. Then sixth question we'll take. Okay. So state capacity, not policy design, is binding constraint on India's development. Do you agree? ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यू हैव टू गिव लिमिटेशंस ऑफ स्टेट कैपेसिटी. सेकंड की लिमिटेशंस ऑफ पॉलिसी डिजाइन, देन ऑटोमेटिकली आपका वे फॉरवर्ड आएगा, राइट? दिस. अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन you can directly give with the definition. State capacity refers to the ability of the state to enforce laws, collect revenue, and perform the welfare functions. So you can go with definition, और जो कॉमन इंट्रोडक्शन मैंने दिया था फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चंस, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन envisions a welfare state under article or under DPSP or under article 38-39. However, the faulty policy designs and limited state capacity hampers that mandate or is the major bottleneck in that mandate. ठीक है, वो भी कॉमन इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था वो यूज करके भी दे सकते हो, और यू कैन गो विद द डेफिनेशन ऑल्सो. ठीक है, देन यू कम विद स्टेट कैपेसिटी, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ऑन इंडियाज डेवलपमेंट. अब यहाँ पे स्टेट कैपेसिटी, तो स्टेट कैपेसिटी मींस स्टेट के आपके इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, राइट? तो स्टेट के कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके? व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट? यस, यू हैव जुडिशरी, यू हैव ब्यूरोक्रेसी. सो इसमें भी आपका एडमिनिस्ट्री in project implementation and your tax administration. ठीक है, then you have your
local bodies. Hmm. Who else are the or can be incorporated under the states? Hmm. Yes, hospitals are not part of the state. Legislature भी ज्यादा नहीं है. Hmm. So you have judiciary, bureaucracy, local bodies. Hmm. You have regulatory bodies. ठीक है. This. Hmm. Then कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव में अगर देखोगे तो टेक्नोलॉजी, लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, लिमिटेड फिजिकल कैपेसिटी. So these will become your subheadings and automatically इनके issues बता दो and how they impact development. So what is the major issue in judiciary? So pendency of cases, over 5 crore cases pending. How does it impact India's development? Hmm. So because of this, poor contract enforcement, and this deters investment or ease of doing business. Right? You need to establish the limited capacity of the state and how it impacts development. Okay. Similarly, bureaucracy with respect to the implementation, so lack of last mile reach and corruption leads to inclusion exclusion errors. तो उसका एग्जाम्पल दे दो कि कैग रिपोर्ट ऑन स्किल इंडिया मिशन. ठीक है. सिमिलरली टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सो इनएफिशिएंसी लीड्स टू लो टैक्स टू जीडीपी ratio, and this limits resources for development. ये पार्ट एस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है, how it impacts development. Then you have local bodies, so low devolution of 3Fs. So limits there this mm, mm, developmental role. So example, majority PRIs have not prepared the village development plan. Similarly, आपका urban local bodies, they have less than 1% of own revenue, which leads to the this poor urban infrastructure. So example, recurrent Delhi floods. Then you have regulatory bodies, so staff vacancies and limited mandate leads to the with respect to this key uh, ineffective regulation. ठीक है. So example, you can give that Harshad Mehta scam या फिर the recent इसका आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्कैम. ठीक है. तो वो या फिर अंडर डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स, देन लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लो फिजिकल कैपेसिटी. इसमें कि आपका एजुकेशन स्पेंडिंग इज ओनली अबाउट 2.9% of GDP, health is up only about 2% of GDP. So this
reduces the human development or human resource capabilities. तो इतने सारे अच्छे आपके पॉइंट्स हो सकते थे यहाँ पे. एंड हियर इफ यू वांट यू कैन ऐड वन ऑफ द ग्राफ और फ्लो चार्ट. सो जैसे ग्राफ में विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स यू कैन ऐड दिस ग्राफ की vocational training. This is 96% in South Korea, 80% in Japan, 5% in India. This highlights your poor human resource development. If you want, you can add more points also. Women development also you can add. This is your first part. Then comes the second part is the issues. However, faulty policy design is equally important dimension of developmental deficit. तो how it leads to this. तो पॉलिसी डिजाइन के इश्यूज लिख दो. ठीक है. सो मेजरली विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिसी डिजाइन यू हैव टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग, राइट. तो दिस basically the top down policy making, it ignores local conditions. Second, lack of database decision making. Okay, so this leads to poor design and inclusion exclusion errors. Third, lack of departmental coordination leads to duplication. तो यहाँ पे कोई भी आप एग्जांपल दे दो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स का. ठीक है. देन व्हाट एल्स. Poorly designed policies leads to corruption and diversion of resources. ठीक है. These, yes, so non-inclusive policies या फिर with respect to the policy bias. So policy bias में भी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोकल बॉडीज को दे सकते हो कि फोकस ऑन रूरल एरियाज एंड निग्लेक्ट ऑफ अर्बन पुअर्स. सो एग्जांपल आपको देना है तो नो मनरेगा फॉर अर्बन एरियाज और नो अर्बन मनरेगा. ठीक है. तो इतने आप पॉइंट्स दे सकते हो यहाँ पे भी. विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिसी डिजाइन आपको कभी भी आ गया तो ये आप पॉइंट्स दे सकते हो. ठीक है. देन यू गिव द वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड हर किसी को एड्रेस करो तो टॉप डाउन की जगह बॉटम्स अप प्लानिंग बाय डिवोल्यूशन ऑफ 3F to local bodies. That is the Manishankar Iyer committee. या फिर you can also give subsidiary principle. ठीक है. Then you add the global and state level best practice. So participatory budgeting of Porto, Algero, ब्राजील या फिर पीपल्स प्लान कैंपेन ऑफ केरला. अब रह गया आपका कमीशन. तो यू कैन मेंशन इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर अंडर पीपीपी
for developing social infrastructure. So this is Niti Aayog recommendation or PPP in district hospitals. या फिर capability approach of Amartya Sen also you can mention, to increasing health spending to 2.5%, education to 6%. ठीक से पढ़ो क्वेश्चन, मुझे मत बताओ क्या पूछा है कि स्टेट कैपेसिटी एंड नॉट पॉलिसी डिजाइन इज द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट इन इंडियाज डेवलपमेंट. डू यू एग्री में यस आई एग्री दैट स्टेट कैपेसिटी इज एन इशू. नो आई डोंट एग्री, पॉलिसी डिजाइन इज ऑल्सो एन इशू. ये पूछा है. ठीक से देखो तो, पढ़ो तो क्वेश्चन अच्छे से. नो, ये वाला क्लियर है? यस. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ऑलराइट, चलो देन दिस वाज सिक्स्थ. ओके, प्रेशर ग्रुप अगेन. यहाँ पे भी यू नीड टू अंडरस्टैंड the question properly. Pressure group का question already we have covered multiple times. You already have one diagram. ठीक है, वो तो automatically आएगा. But you need to understand the difference between the terminologies. Okay, so what they have asked, pressure groups in India are effective in articulating sectional interests. ठीक है, तो जहां पे इन्होंने सेक्शनल बोला है तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेक होल्डर अप्रोच लगेगा यहाँ पे. बट रेयरली सक्सीड इन एग्रीगेटिंग देम इनटू कोहेरेंट पॉलिसी अल्टरनेटिव्स. ठीक है, सो उनका कहना है कि दे आर्टिकुलेट द डिमांड बट फेल टू प्रोवाइड कन्वर्ट दोज डिमांड्स इनटू पॉलिसी अल्टरनेटिव्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू टेक द रिसेंट द नीट प्रोटेस्ट. ठीक है, सो इन नीट प्रोटेस्ट दे आर्टिकुलेटेड their interest that the system needs to change, paper leaks needs to stop. That were their primary interest, right? But they fail to provide the proper policy. उनका डिमांड क्या रह गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो. ठीक है, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस, right? They didn't provide any proper policy alternative. That is what has been asked. Okay, so how they are successful in providing or articulating the sectional interest, but how they fail to provide the proper policy alternative. जैसे फार्म बिल्स का हो गया, फार्मर्स 18 महीने प्रोटेस्ट करते रहे टू अपोज द फार्म बिल्स, बट दे डिडंट प्रोवाइड एनी अल्टरनेटिव टू इट. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. अब सिंपल, एटलीस्ट आपका हाफ पेज सॉर्टेड है. यहाँ पे अगर देखोगे हिंदी मॉडल आंसर दिस, यू हैव the definition ready. Organized interest association that influence policy without contesting elections. This definition you give. This is the common input output diagram that you will highlight. Okay, with respect to the pressure groups. To people, their inputs as in their interest and support goes to pressure group, which goes as an input to government, and output comes from government to people and feedback from people to government. ठीक है, so this is the input output diagram you have. So NGO pressure group में ये आप निकाल सकते हो हमेशा. ठीक है, then what they have asked कि articulate the sectional interest. तो पकड़ लो sections. तो farmer groups, second business groups, third women groups, fourth legal reform groups. ऐसे to section perspective you pick these.
different groups and how they provide for the art or how they articulate their interest. So for example, कि farmer protest to oppose farm laws and demand MSP. ठीक है. Then business process groups कि they, for example, the business process groups like FICCI or Confederation of Indian Industries, ठीक है, in there, or they lobby for favorable tax regimes or tariff protections. So example, opposition to RCEP, ठीक है. सो जो रिस्ट्रिक्टेड उनका रोल रह गया. ठीक है. दिस देन with respect to the legal reforms, to file a PIL opposing government policies. कोई भी दे दो वहां पे एग्जाम्पल. Similarly, environmental groups oppose developmental programs. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेव आरे मूवमेंट इन मुंबई. ठीक है. या फिर दी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी वायलेंस. तो यू कैन राइट कि हाउ डिफरेंट सेक्शंस and their groups articulate the interests. Then comes the core demand that they fail to provide a coherent policy alternatives. There's a failure to provide policy alternatives. So why they fail? अब बेसिकली वाई दे फेल देखोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप, हर कोई इंटरेस्ट ग्रुप खुद का इंटरेस्ट देख रहा है. राइट. सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वाइडर पॉलिसी और दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वाइडर लॉज एक्सेट्रा. ठीक है. सो दे हैव दी, सो जो भी आपके प्रेशर इश्यूज के, प्रेशर ग्रुप्स के इश्यूज है वही लिखना है. तो नैरो ग्रुप इंटरेस्ट्स, उनके सिर्फ ग्रुप इंटरेस्ट होते हैं. तो दिस प्रिवेंट्स ट्रेड ऑफ रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग interests of different sections. ठीक है. So, जब भी आपको कोहेरेंट पॉलिसी आपकी जब भी होती है, दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन दी निगोशिएशंस, ट्रेड ऑफ्स. ये तो वहां पे गिव एंड टेक अप्रोच होता है. सिमिलरली अब जो भी आप देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स हैव निगेटिव एजेंडा. They generally mobilize to oppose something rather than to propose something. ठीक है. So this is the second reason, that is restrictive agenda. ठीक है. So generally mobilize to oppose policies rather than propose alternatives. ठीक है. देन प्रेशर ग्रुप्स आपके इंस्टीट्यूशंस है. राइट. तो आपके इंस्टीट्यूशनल इश्यूज भी यहाँ पे institutional issues. राइट. तो इंस्टीट्यूशनल इशू आपका मेजरली क्या आएगा कि दे लैक रिसोर्सेस एंड
research support to draft a comprehensive policy. मेजॉरिटी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स, अभी इंस्टीट्यूशंस, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो, एनजीओ वगैरह, दे विल नेवर हैव दीज पॉइंट्स. ठीक है. दिस देन फोर्थ, की मेजॉरिटी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स या फिर आपके सोशल मूवमेंट्स जनरली जो होते हैं वो दे आर शॉर्ट लिव्ड. जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टूडेंट प्रोटेस्ट डिसेपिएटेड आफ्टर रेजिग्नेशन, या फिर फ्रॉम प्रोटेस्ट डिसेपिएटेड आफ्टर दी when the prime minister announced the this repeal of the farm laws, right? ये आपके पॉइंट्स हैं कि why they are not able to provide the this. अब इसके साथ साथ अदर इश्यूज करके जो भी आपने प्रेशर ग्रुप्स के आपको इश्यूज पता है, ठीक है, कि लैक ऑफ इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी हो सकता है, या फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, ठीक है, इन देयर फंक्शनिंग, दोज पॉइंट्स यू कैन ऐड 2 पॉइंट्स, यू विल हैव योर पॉइंट्स. ठीक है. इज दिस क्लियर? यस. व्हाट एल्स वी कैन डू हियर? You can briefly provide, however, some pressure groups were successful in providing policy alternatives. कि जैसे आपका जो यस MKSS through जन सुनवाईज, it articulated the RTI Act. Similarly, India against corruption, it provided the draft Lokpal Act. ठीक है. Similarly, you have UCL, this litigation in Supreme Court. It led to National Food Security Act. ठीक है. यस, मेघालय सोशल ऑडिट लो, ये आपका एक्सपेक्टेड है. So those who have covered this point, they will get a good marks. Sometimes they have been successful, and after that you can simply give way forward. जैसे UK US system, the lobbying act, and similarly ensuring the transparency in their function. And then you can conclude the important cog in the wheel of governance. ठीक है. Is this clear? Yes. All right. Then India and Japan need each other more today than at any time in their history. So I'll simply just pick just a second. Okay. So with respect to the framework of IR questions, so जो भी आपके bilateral countries related है, you can start with the quote या फिर recent context. Then you give fact file. फैक्ट फाइल में उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस अभी क्या है, तो जैसे इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डेटा, ये बायलैटरल रिलेशंस मेजर कंट्रीज के रिले आप रट्टा लगा के लगो
This will add more value into your answer. After this, simply the framework that I am giving. So geopolitical, जियो इकोनॉमिक, इसमें आपका आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, मल्टीलैटरलिज्म, कनेक्टिविटी। ये आपके 4 डायमेंशन। इसके बाद पीपल टू पीपल कनेक्ट, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आपको पूछा है इंडिया एंड जापान नीड ईच अदर more today than any time in their history. So why they need each other? So from geopolitical perspective, so the US isolationism, this and US isolationism and protectionism. This because of this, both countries need to protect global trade order. Then the rise of China. So both need each other to ensure the supply chain resilience. Okay. Similarly, with respect to the geo-economic infrastructure, so Japan has capital and India has need. For example, आपका bullet train project. With respect to the technology, Japanese technology advancements needs India's manufacturing scale. So, for example, आपके Toyota या फिर the other companies having their factories in India. And then with respect to the trade, जैसे इंडिया जापान ओवरऑल ट्रेड, या फिर ये भी दो आप लिख सकते हो। देन फ्रॉम डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव टू इंश्योर रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक, to protect them from rising China's wolf warrior diplomacy in the region. Then in multilateralism, so to reform global governance institution, example, both are part of G4. This connectivity तो ज्यादा नहीं आएगा ये. So these are the reasons why they require each other. इसके बाद briefly बस challenges दे दो, तो वे फॉरवर्ड दे दो. अब कुछ common challenges which you can use is one, India's delivery deficit, delays in the project implementations. यस, तो वो आपका आएगा यहाँ पे सोशल डायमेंशन में with respect to the demography. That is also an important aspect. Japan's aging population with India's median age of 29. Then challenges India's delivery deficit. For example, delay in the bullet train projects. Second, trade imbalance. India's imports are 3 times more than exports. दो ये हो गए. वे फॉरवर्ड में फर्स्ट कि अब अगर वो डेवलप्ड कंट्री है तो कंडक्ट दी joint projects in
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. तो जैसे एग्जांपल यू हैव एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर. एंड सेकंड, strengthen institutional diplomacy. 2+2 ministerial dialogues. These are the common that you can use. Then you can conclude. ठीक है. 10. Now, ये clear है the framework for the IR? Any doubts with respect to the IR framework? Yes. Clear है? Okay. चलो. Then question number 11. This is also, here also it will be a test of your articulation. So what they ask is, money power has replaced muscle power as the chief distorter of Indian elections. And in this context, discuss gaps in the regulation of election expenditure and evaluate the case for state funding of elections. Okay, so if you see, this is your implicit demand. You have to highlight how money power has replaced muscle power. Second, gaps. This is your first core demand. And then evaluate में, state funding में, positives, negatives. Because you will be having total 4 headings into this also. The first is intro. You can always go with this key. Free and fair elections is sine qua non for the resilient democracy. However, money and muscle power undermines that spirit. One common introduction and then connecting statement. Then you talk about money power replacing muscle power. So जैसे आपको दो चीजें यहाँ पे बतानी है. एक कि हाउ मनी पावर हैज इंक्रीज्ड एंड हाउ मसल पावर हैज डिक्रीज्ड. ठीक है, तो मसल पावर आपकी कैसे डिक्रीज हो गई है? तो लो बूथ कैप्चरिंग एंड वायलेंस. ठीक है, सो एग्जांपल रिसेंट बंगाल इलेक्शंस. Similarly, the EVMs have brought transparency. या फिर which one? Then deployment of central forces has reduced the muscle power. तो how muscle power has decreased and how money power has increased. money power में लिख दो फिर पॉइंट्स कि उसके रिलेटेड जो भी आपका डेटा है कि the 2024 Lok Sabha was the costliest Lok Sabha, where 1.35 lakh crore was used. So वो 2025 वाला वो डेटा दे दो. ठीक है. सेकंड की rise in wealthy candidates and MPs. ठीक है कि around 93% MPs are crorepati's. This is ADR. So these 4 points are sufficient. या फिर अगर और भी देना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि राइज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर मनी इन बिफोर इलेक्शंस. So this explains how money power has replaced muscle power as chief distorter. यहाँ पे भी दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है. सो जैसे ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट वाला जो क्वेश्चन था, ऑन दी सेम लाइंस. देन आपको गैप्स इन रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर
कैप्स तो आपके इजी है. फर्स्ट, the election expenditure of political parties. So there is no cap. Then unregulated or poorly regulated funding, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स या फिर डोनेशंस लेस देन 20K नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड. ठीक है. देन थर्ड की दिस की spending on social media, influencers, etc. is hard to track. And then from the perspective of candidates, the third person expenditure, for example, by groups, etc. So these are the major gaps. या फिर आपका थर्ड स्टेक होल्डर यहाँ पे होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. So election commission of India lacks the manpower to tackle the use of money in elections or to monitor distribution of money. Yes. Secondly, it doesn't have power to deregister parties for misuse of money. Right? This. तो ये अब पॉइंट्स यूज कर सकते हो ऐसे. देन arguments in favor of state funding of elections. So state funding arguments in favor, simply it will reduce black money, right? It will reduce criminalization by bringing honest and upright or providing a level playing field for honest and upright candidates. Similarly, it has been suggested by committees. So which committee has suggested? Indrajit Gupta committee. Okay. Similarly, it is also global practice in Germany, right? This and against में यहाँ पे कि even after the state funding, just reduce politician, bureaucrat, corporate nexus identified by Vora committee. But negatives में fiscal burden may increase. ठीक है. Secondly, कि even after the state funding, the use of money power won't reduce, right? So the state funding may complement the money power rather than reduce, because even after state funding वो money power तो आपका continue रहेगा ही. Then कभी भी किसी के भी अगेंस्ट जब आप देते हो कि वेदर कि जैसे अगर आपको पूछा वन नेशन वन इलेक्शन वेदर इट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है. सो व्हेन यू आर गिविंग द काउंटर आर्गुमेंट, ऑलवेज गिव दिस पॉइंट की स्ट्रक्चरल इश्यूज रिमेन अनएड्रेस्ड. स्ट्रक्चरल इश्यूज आपके कौन से हैं? लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, पुअर enforcement of model code of conduct. ये आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज रिमेन्स
unaddressed. ठीक है? This then you can also talk about the point with respect to the it may favor larger parties over smaller regional parties. ठीक है? ऐसे तो उसके counter argument and then you give the way forward and conclusion. Is this clear? Yes. The structure and the framework for this. Okay. Then you have question number 13. This is also comparatively easy. Only the structure ki Rajya Sabha is the institutional voice of states. State representation, MPs are elected by votes of MLAs. Then they have federal powers. So जैसे giving power to the parliament to make laws on the state subject or establishing all India services. Okay. That then rarely behaves at federal chamber. So why it doesn't behave as federal chamber? Because आपका जो डोमिसाइल क्राइटेरिया है was removed. Because of that, the representative need not to be from the same state. Right? So आपका डोमिसाइल क्राइटेरिया रिमूव किया. Then you have anti-defection law. So this binds MP to the party whip instead of state interest. Okay. Then third, use of money bill route to undermine the Rajya Sabha. Fourth, overall decline in functioning. इसका आपका जो भी डेटा है वो डेटा के जैसे reduced referral of bill to the parliamentary committees. So that is relevant even for Rajya Sabha also. ठीक है? This तो डिक्लाइन इन फंक्शनिंग तो डिसरप्शन वगैरह वो भी लिख सकते हो. एंड अब इन्होंने क्या बोला है, रेयरली बिहेव्स एज फेडरल चेंबर. सो फेडरल पावर्स आर रेयरली यूज्ड. So for example कि आर्टिकल 312 which provides new all India services was last used in 1966 or Article 249 also. ठीक है? This yes, single party dominance also. These are the points. What they can learn from American and British. So American से तो आपको पता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन. एक ब्रिटेन से आपको पता है कि यूजिंग एमिनेंट पर्सनैलिटीज. बस अब ये पॉइंट्स तो आपको पता है, बट यू नीड टू जनरेट एटलीस्ट 3 मोर फॉर ईच. जब भी स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू द कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक, जब भी आपको आता है जस्ट हैव द ब्रॉडर आइडिया. आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो दूसरे कंट्री का है वो हमसे बेटर है. ठीक है? तो यूएस का आपका जो होता है वो ऑब्वियसली इंडिया से बेटर ही होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो. तो व्हाट यू हैव टू डू इज वट एवर पॉइंट ऑफ द यूएस और यूके you generate based upon that. But for others, for other points you generate based upon the limitations of Indian system.
ठीक है, तो इंडियन सिस्टम के लिमिटेशंस अब राज्यसभा के क्या है, दीज आर द लिमिटेशंस। ठीक है, तो इसमें से अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका एमिनेंट पर्सनैलिटीज दो आ गए यहाँ पे कि विथ रिस्पेक्ट टू द विप इंस्टीट्यूशनल, सॉरी एंटी डिफेक्शन। तो विप सिस्टम इज लिमिटेशन, तो विप सिस्टम का वे फॉरवर्ड क्या है, लिमिटिंग दिस एंटी डिफेक्शन ओनली इन केस ऑफ द दिस, ओनली इन केस ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं आएगा राज्यसभा में, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। ठीक है, देन मनी बिल रूट, सो improving increasing power on finance bills, यूके में हो सकता है। सेकंड, अब पार्लियामेंट्री कमिटीज आर मोर स्ट्रोंगर इन द यूएस। ठीक है, सो मैंडेटरी रेफरल ऑफ बिल्स टू पार्लियामेंट्री कमिटीज, और जिन्होंने भी एक्स फैक्टर पढ़ा है दे नो with respect to the parliamentary committees, the members also have the research support in the US, right? So strengthening the research या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एमपीज by providing research support through or modeled on US Congress research support। ठीक है, ये तीन तो आपके आ गए। एंड देन फ्रॉम द यूके सिस्टम, अब यूके सिस्टम तो एक तो आपका एमिनेंट पर्सनालिटीज का आ गया। ठीक है, देन आपका फाइनेंस बिल का आ गया। दो ही आपके आएंगे, दो से भी और नहीं आएंगे। इसके बाद आपको बस ये कर लो कि अदर रिफॉर्म्स नीडेड, इसमें एक या दो लिख दो, खत्म, विल हैव सफिशिएंट पॉइंट्स। ठीक है, सो हियर इन दिस पर्टिकुलर आंसर की इंस्टीट्यूशनल वॉइस ऑफ स्टेट यू कैन हैव 5 points, rarely believed as federal chamber you can have 5 to 6 points, here you have 3 points, here you have 2 points। ठीक है, तो 10, 15, यहाँ पे अदर रिफॉर्म्स नीडेड 3 दे दो, you will meet your criteria of 18 points। ठीक है, ये वाला क्लियर है, हाउ यू नीड टू जनरेट द पॉइंट्स बेस्ड अपॉन द लिमिटेशंस ऑफ इंडियन मॉडल। यू जस्ट आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस, हमारे जो लिमिटेशंस है वो वहां पे ऑलरेडी एड्रेस्ड हो चुके होते हैं, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट इन आर्टिकुलेशन। ओके, द नेक्स्ट 18, ये भी जो है 14th क्वेश्चन, स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन complete justice under article 142, should this power be subject to defined limits। यहाँ पे भी if you see the articulation, basically what they have asked is scope, तो scope में again article 142, so article 142 is basically it gives judiciary executive powers to pass any order or decree in order to achieve complete justice। ठीक है, आर्टिकल 141 gives it legislative powers, that any order passed by the Supreme Court has the force of law। तो you start with that आर्टिकल 142 की definitions या फिर वो provision से, that will be your introduction, then scope। Basically
उसका जुरिस्डिक्शन या फिर उसका आपको स्कोप पूछा है, तो पहले तो बताओ कि वाइडर jurisdiction, it can pass any order against any person, institution, or body. It has the wider jurisdiction. Then to define the scope, अब यहाँ पे आ जाओ फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, जो भी जुडिशरी के फंक्शंस है उसको इनकॉर्पोरेट करो। तो जैसे टू चेक एग्जीक्यूटिव इनएक्शन और ओवररीच। So example, ban on diesel vehicles in Delhi, या फिर graded response action plan for Delhi air pollution. Similarly, to ensure checks on constitutional offices. जैसे एग्जाम्पल अभी रिसेंटली विच the deemed assent under Article 200 in Tamil Nadu case, that was also under 142. Okay. Third, to protect the fundamental rights of citizens, इसके रिलेटेड एक दो जजमेंट्स दे दो। ठीक है। फोर्थ, अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हो गया, एग्जीक्यूटिव इनएक्शन हो गया, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट टू फिल द लेजिस्लेटिव वैक्यूम। ठीक है। सो लेजिस्लेटिव वैक्यूम रिलेटेड भी दे सकते हो। फंडामेंटल राइट्स के लिए एमसी मेथा केसेस दे दो। दस। ठीक है। अब इतना तो आपका स्कोप हो गया। या फिर टू एड्रेस द हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो एग्जाम्पल 142 यूज्ड इन अयोध्या वर्डिक्ट। दस। ये आपका स्कोप आ गया। बेसिकली आपको जजमेंट्स ही देने हैं। तो बेस्ड अपॉन द जजमेंट्स यू कैन टॉक, और उसको आर्ग्यूमेंट्स विल बी बेसिकली द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। सो ऑल द पावर्स ऑफ जुडिशरी, अगर ये क्वेश्चन आ गया विथ रिस्पेक्ट टू स्कोप ऑफ जुडिशियल पावर्स अंडर आर्टिकल 32 टू 26, आपके यही डायमेंशंस रहेंगे, ओनली द एग्जांपल्स विल चेंज। ठीक है। इफ दे आस्क यू 141, सेम डायमेंशंस, एग्जांपल विल चेंज। इफ दे आस्क यू जुडिशियल एक्टिविज्म, सेम डायमेंशंस, एग्जांपल विल चेंज। सो द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी को अच्छे से समझो, यू विल हैव योर डायमेंशंस। ठीक है। बाकी के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मॉडल आंसर में डाले, यू कैन पिक दोस, बट these are the core dimensions with respect to functions of division. Then should they subject to defined limits, मतलब कि उसके स्कोप को नैरो करना है या फिर उसको डिफाइन करना है। सो wherever you define something, it brings greater predictability and transparency, या फिर अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी। ठीक है। देन अब जैसे ही अब जुडिशरी के पावर कर्टेल कर रहे हो, दैट मीन्स इट अपहोल्ड्स प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, राइट? दिस देन so it can prevent judicial overreach, can protect separation of power,
then it can reduce institutional friction. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि the vice president, the former vice president Jagdeep Dhankar, he called 142 as nuclear missile. This, ठीक है. Then there is or the no appeal lies against the 142 order. So because of that needs the defined limits. ठीक है. This एंड जब भी आपको किसी चीज का जुडिशियरी के लिए जस्टिफाई करना होता है आइदर फॉर और अगेंस्ट, सो जुडिशियरी दोनों साइड से जुडिशियरी ने ही बोला होता है हर बार. यस, जुडिशियरी इटसेल्फ हैज कॉशन्ड अगेंस्ट judicial activism and advised judicial restraint. अब ये सेम डायमेंशन हमारा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में भी आएगा. ठीक है. यस, सो जुडिशरी लैक्स expertise and mandate to frame policies. So example, firecracker ban, वो भी दे सकता. These, because of that there needs to be the defined limits. Arguments against, अब ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिख दो कि पहले तो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैव envisioned active judiciary for social revolution. ठीक है. First, then it helps keep or it helps judiciary to keep check on administration and government. ठीक है. This, then third, it acts as a safety wall, या फिर इसी में लिख दो जब भी चेक ऑन जुडी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट होता है तो acts as a safety valve. In case of breach of rights, citizen can approach the court. ठीक है. Then upholds constitutional morality and supremacy. वही कीवर्ड्स आएंगे आपके. And last, the judiciary itself has provided guidelines to limit use of 140. तो उसने खुद से ही दिए है तो और फिर से देने की जरूरत नहीं. ठीक है. So these will be arguments against. Even in this question you have 3 demands. यहाँ पे आप 6 पॉइंट्स लिख दो. Here you can write 5. Here you can write 5. ठीक है. Then also you have 16. Then you give the way forward. 2 से 3 पॉइंट जुडिशरी के रिलेटेड वे फॉरवर्ड दे दो, कंक्लूजन कर दो. ठीक है. This. Now the last question, which will be again one your question. This.
India's development partnership model is its principal soft power currency in the neighborhood and broader global south. Examine its strength against the Chinese finance. First, the development partnership model. So you give the elaboration on that. So development partnership model in his neighborhood, global south. And then examine, बोला तो you give strengths and you give weaknesses. So simple. What are डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल्स? सो डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल के डायमेंशंस आपके क्या क्या है कि फर्स्ट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, डिजास्टर पर्सपेक्टिव से, टेक्नोलॉजिकल. So from economic perspective, we give line of credit. Okay, we give grants and aids. From social perspective, say we run the capacity building programs, जैसे सोलार मामा स्कीम इन अफ्रीका, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू दी, जैसे सोलार मामा इन अफ्रीका, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल इन, या फिर आपका सलमा डैम इन अफगानिस्तान, राइट, यस, आईआईटी कैंपस इन इथियोपिया. ठीक है. देन फ्रॉम डिजास्टर पर्सपेक्टिव की डिजास्टर और इंडिया एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड पोस्ट डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन. एंड टेक्नोलॉजी में अगेन यू फर्स्ट हैव द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भी टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी में भी आएगा. एंड सेकंड, you have export of India's digital public infrastructure. So UPI working in 6 countries, I think. Okay, so this is India's development partnership. Yes, Operation Dost, Sagar Bandhu, ये first responder इधर आए. So you can give a lot of examples here. So line of credit में you can give Sri Lanka balance of payment के time पे. ठीक है. Grants में you can talk about की grants to this Bangladesh or Nepal. This digital public infrastructure working in 6 countries. International Solar Alliance तो पता है. Post disaster reconstruction in Nepal or presently in Myanmar. ठीक है. These are India's development partnerships. And then you talk about the strengths compared to the Chinese finances. So you can either use the table या फिर पॉइंट में ही लिखो. ठीक है. अब डेवलपमेंट पार्टनरशिप में आपके स्ट्रेंथ्स जो पूछा है, तो ओवरऑल वी अडॉप्ट द लाइफ साइकिल अप्रोच. ठीक है. सो विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल पॉलिसी अप्रोच, इंडिया पॉलिसी इज डिमांड ड्रिवन and bottoms up, whereas Chinese is top down. So example की with respect to इसका आपका एग्जाम्पल आएगा, कोई भी दे दो. You can give the BRI as a model. Then India's model is or focus on inclusive development versus China's extractive model. So example in Afghanistan, India built the parliament and hospitals, whereas Chinese focus is on mineral resources. ठीक है. एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर मत दो, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है. क्या है उसमें एग्जांपल दोगे? कुछ हुआ ही नहीं है उसमें तो. ठीक है. तो ये अफगानिस्तान का दे दो. देन इंडियाज फोकस इज अपॉन द सोशल
development versus Chinese focus is upon the elite capture. So example, allegations of corruption in Nepal. ठीक है, these. फिर आपका आएगा कि इंडिया प्रोवाइड द कंसेशनल लोन्स वर्सेस चाइनाज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. So example, Hambantota port. This. Then what else you can think of? So with respect to the implementation, the Indian projects generally involve local employment, whereas China generally has the Chinese technology and workforce. So example, recent attacks on Chinese workers in this CPEC projects या फिर इन बलूचिस्तान. ठीक है, this. Then India's philosophy is based upon principle of non-reciprocity and the this principle of respect for sovereignty, whereas China's focus is basically on commercial interests. ठीक है, this. So यहाँ पे लिखा है ना इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इंडिया फोकस इज अपॉन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर whereas China's focus is upon physical infrastructure. ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपके स्ट्रेंथ्स सफिशिएंट है. और वीकनेस फिर इंडियाज डिलीवरी डेफिसिट की डिलेज इन दी प्रोजेक्ट डिलीवरी. सेकंड, चाइनाज deep pockets. India cannot match the scale and depth of Chinese funding. Third, delivery deficit भी है, delays. Similarly, we also have the institutional deficit या फिर institutional capacity deficit. ये आपका vacancies in MEA. This leads to the poor project monitoring. Then India lacks the technological expertise of China. This. Then अब नेबरहुड में पूछा है तो स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू दी perception of India's big brother attitude. India out campaign in Maldives, despite India being the largest, yes, or despite India providing large developmental assistance. Then you, in the way forward, you can give the points like strengthening or leveraging the Quad or Asia-Africa growth corridor for better connectivity. Then this bridging the capacity deficit to ensure the timely delivery of the projects.
ऐसे 2 से 3 पॉइंट्स आप दे दो एंड देन यू कैन कंक्लूड। ठीक है, अब यहाँ पे यू ऑल्सो हैव द स्कोप टू गिव द ग्राफ। जब आप डीप पॉकेट लिख रहे हो, यू कैन सिंपली ऐड द ग्राफ ऑफ India GDP is about 4.5 trillion, whatever the number is. China GDP is about itna hai. What is the number of China GDP? I think around 10 or 11 trillion. Yeah. So you can have the graph India, China. I think 10 trillion के आसपास होगा GDP comparison. ऐसा भी 13 ट्रिलियन ग्राफ भी ये आपका आ जाए. So even with the limited content, you can have the decent also. Yeah. Is this clear? Yes. ये भी convergence of interest and divergence of expectations. Again, geopolitical, geoeconomic, defense and security, multilateralism perspective से you can generate the points. ठीक है. So convergence of interest geopolitical में with respect to China, with respect to free and open Indo-Pacific, जियो-इकोनॉमिक में विथ रिस्पेक्ट टू दी दिस की ट्रेड. ठीक है. देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में अगेन विथ रिस्पेक्ट टू दी दिस टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन थ्रू इंडिया's recognition as major defense partner, increasing interoperability of this military forces to the foundational agreements. मल्टीलैटरलिज्म में भी एक दो दे दो. डाइवर्जेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस में उनके डाइवर्जेंस ऑन द सेम लाइंस. ठीक है. That so this is how you need to, or if you would have thought this question, the first step is understand the demands of the questions properly. Once you understand the demands of the question, identify the keywords, then automatically you can articulate the points. You just remember this fundamental principle that the only way to get good marks is relevance. If you want, I can just give you an example. So, just a second. So the name Akshat Singhal. He was all India rank 352 last year, but his means marks in the GS were 460. So I think after Akansh Dul, he had the highest marks. You read the copies of his. You will find that it's only based upon the arguments that he has gotten that many marks. Okay. So just work upon these things. Second, pick the micro themes. Have your facts file ready. Have your keywords ready. Have your introductions, conclusions ready. So that will help you sort out at least half or 75% of the page. Okay. The name is Akshat Singhal. Okay. Is this clear? Now, any doubts with respect to the GS2 paper, you can raise your hand. Yes. No doubts. All right. So we'll end our today's session. Tomorrow, Arvind sir will be taking GS paper 3. Yes, if you want to learn the frameworks for the GS paper 3, you attend tomorrow's lecture. Okay, the link is same. All right. All the best, guys. Good night.